जय जगन्नाथ एवरीवन। फास्ट क्लास रे आमे किछि पॉइंट डिस्कशन करिथिले यार्थिंग चैप्टर उपरे एवं एबे मध्य सेकंड क्लास रो आपण समस्त मु स्वागत जणाउची। तो चलंतु सेकंड क्लास रे मध्य जॉइन हे जानतु समस्त। सेकंड क्लास रे आमे आउ किछि इंपोर्टेंट जो यार्थिंग रो इंपोर्टेंट टॉपिक जो अछि वन लाइनर क्वेश्चन ताको डिस्कशन करि दबा। तो चलंतु जो बाकी थिला हमर नेक्स्ट जो पॉइंट गुडा इंपोर्टेंट पॉइंट गुडा बाकी थिला ताकू डिस्कशन करि नबा। तो टाइप ऑफ यार्थिंग जनरली यूज इन इंडिया केते प्रकार अछि ना प्लेट यार्थिंग अछि, पाइप यार्थिंग अछि, मैट यार्थिंग अछि और रॉड यार्थिंग अछि। तो जो एटा कोन पचरला ए जो क्वेश्चन ता पचरला से टाइप ऑफ यार्थिंग हमर केते प्रकार हम इंडिया रो अछि ना टाइप ऑफ यार्थिंग जनरली यूज इन इंडिया। आमे जनरली केते प्रकार रो यार्थिंग यूज करूछु बोली से पचारछि कोन ना प्लेट यार्थिंग आमे यूज करूछु, पाइप यार्थिंग यूज करूछु, मैट यार्थिंग यूज करूछु, रॉड यार्थिंग मध्ये यूज करूछु। तो केते प्रकार आमे 3-4 प्रकार रो यार्थिंग यूज करूछु। जानि परलो नेक्स्ट पॉइंट को जिबा। A metal plate, pipe or other conductor or area of conductor electrically connected to the general mass of the earth is called earth terminal। तो earth terminal कहले तमे कोन बुझुछो ना a metal plate, pipe or other conductor or array of conductors electrically connected to the general mass of the earth is called earth terminal। जानि पारलो। तो एटा गोटे डेफिनेशन दे कहला एर्थ टर्मिनल रो डेफिनेशन कोन ना ए मेटल प्लेट और अदर कंडक्टर और एरिया और कंडक्टर इलेक्ट्रोलाइट कनेक्टेड हेतिबो केमिति ना टू द जनरल मास ऑफ द अर्थ। जनरल मास ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड कोन अर्थ टर्मिनल। In a faulty condition the equipment should be brought to dash by earthing of a electrical equipment कोन हबो ना जीरो पोटेंशियल कोन हबो जानि पेलो if fault condition the equipment should be brought to dash by earthing of electric equipment केमिति ना जीरो पोटेंशियल रे। जानि पारलो नेक्स्ट पॉइंट जिबा। the most important कोन कहला ना the most important method of protecting electrical shock is केमिति ना earthing करि पारि कि तमे जदि तो मोस्ट प्रोटेक्शन मेथड को प्रोटेक्शन मेथड ता प्रोटेक्टिंग करिवो इलेक्ट्रिक शॉक रु ना earthing ता। जानि परलो ए पॉइंट ता जानि परलो। नेक्स्ट पॉइंट जिबा इंपोर्टेंट पॉइंट कोन कहिछि the earth leakage relay trip when the neutral to ground voltage limit केतोले ना एक्सटेंड क्रेटन सेट लिमिट क्रिएटन कोन करिवो ना सेट लिमिट क्रिएटन कला समय रे dash color wire is recommended for earth connection of IS code कोटा रिकमेंड करिसंती ना ग्रीन कलर टा आ गोटे कोटा येलो कलर। जानि परलो the maximum limit of earth leakage current according to internal standard IEC 60601 1 केते होबो ना 1 -1 मिली एम्पियर। तो for a plate earthing the कोन कहले the for a plate earthing the creator in the earth should not be less than केते 3 मीटर रु कम होबो नै जेमिति कोन कहले ना the plate earthing रे the create in the earth should not be less than केते 3 मीटर रु कम जेमिति होबो नै। जदि 3 मीटर ता लेंथ कमी जाउची तेबे सेटा ठीक भाबरे earthing हमर होबो नै। As per by BIS the maximum permissible leakage current is any installation is dash of full load current केते ना 1/5000। जानि परलो as per BIS the maximum permissible leakage current is any installation is dash of the of full load current full load current केते हबो ना 1/5000। dash earthing necessary for
से कौन पाई हमर अर्थिंग टा नेसेसरी ना सेव ऑफ इक्विपमेंट एंड ह्यूमन लाइफ मोस्ट प्रायोरिटी दबो ह्यूमन लाइफ को जदि ह्यूमन लाइफ ऑप्शन रे नाही तेबे इक्विपमेंट कोन सेव करिवो कोन इक्विपमेंट को से सेव करिवो जदि फर्स्ट क्वेश्चन कोन हबो ना डैश अर्थिंग इज नेसेसरी फॉर सेव ऑफ इक्विपमेंट इन ह्यूमन लाइफ as per BIS the distance between the building and the ground electrode should not be less than केते 1.5 mm तमरो घर एठी अछि तम बिल्डिंग टा एठी अछि एठु तमे जो अर्थिंग एठी करछो एई एतिकिरु एतिकी डिस्टेंस से केते से पचारि छि सेटा 1.5 मीटर रु अधिक हेले चलिबो किंतु लेस देन 1.5 ओम जेमिति न हुई जानि पाइलो कोन कहले लेस देन 1.5 मीटर जेमिति न हुए should not be less than 1.5 meter the standard size plate of GI earthing plate for earthing is केते ना 60 cm into 60 into 6.35 एटी पिला में दीटा क्वेश्चन मन रख कोन कहले स्टैंडर्ड साइज ऑफ प्लेट ऑफ जीआई अर्थिंग एटी जीआई अर्थिंग बोले 6.35 देला जदि एठी हमर कॉपर अर्थिंग देई थांता जदि एठी हमर कॉपर अर्थिंग देई थांता कोन CUPP कॉपर अर्थिंग जो देई थांता सेटा केना ही थांता ना 60 into 60 into 3.15 ही थांता जानि पाइलो केते ना 60 into 60 mm into 3.15 कॉपर पाइन 3.15 आउ हमर जीआई पाइन 6.35 नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कशन करिबा while testing dash required for earthing of conductor part prior to maintenance कौन कहला earth switch which testing required for earthing of conductor parts prior to maintenance कोटा earth switch next point कहला as for IE rule if the earthing bar is of galvanized steel metal then the nuts and bolts should be कौन होबो galvanized steel कौन कहला as per IE rule if the earthing bar or of galvanizing steel metal जदि कहला earthing bar ता हला galvanized steel iron रो तेबे then nut आ bolt मध्ये कोडे रहबो मन रखियो पिला माने एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे तो से हमर galvanized जदि एटा हमर galvanized steel metal ए तयारी हला बार ता तेबे जो बोल्ट आ नट मध्ये galvanized steel रे जदि कॉपर तयारी हला बार ता तेबे से जो बोल्ट आ नट मध्ये सेटा मध्ये कॉपर हबो सेम रहइबा निहाती आवश्यक तो earthing is not repaired for daily use equipment while have कौन ना equipment of plates plastic body तो जो कौन कहला earthing is not repaired for daily use equipment which have equipment of plate is plastic body जदि plastic body हेइथिबो तेबे हमें एयर सेटी करि परिबानी earthing is not required सेठी हमर earthing दरकार नै कोठी ना इक्विपमेंट जदि हमर प्लास्टिक बॉडी रे होई थाए यूज फॉर earthing of LT फिडल पिलर कोन GI strip यूज फॉर earthing of LT फीडर पिलर जो LT फीडर पिलर अछि सेटा हमें कोठी यूज करूछु ना GI strip रे नेक्स्ट पॉइंट कहले कोन ना the earthing equipment are used to avoid leakage current जो हमर कोन अछि ना the earthing equipment are used to avoid करिवो कोन ना लीकेज करंट को अवॉइड करिवो सॉरी पिला माने for the manufacturing of ground wire dash material is used जो ग्राउंड वायर होची माने फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्राउंड वायर रो मैन्युफैक्चरिंग जो होची सेटा को मटेरियल ले यूज हेची सेटा भलो भाबरे मन रखियो पिले को मटेरियल ना गाल्वानाइज्ड स्टील मटेरियल को मटेरियल ना गाल्वानाइज्ड स्टील मटेरियल भलो भाबरे मन रखो एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे हां as per Indian electricity rule 1956 the supplier must provided and maintain dash at his promise for use by the
कंज्यूमर केमिति ना एर्थिंग इलेक्ट्रोड द्वारा as per Indian electrical rule 1956 the supplier must provide and maintenance earthing electrode at a high permit for used by the consumer जानी पारलो जो 1956 ର इलेक्ट्रिकल रूल जो अछि आई रूल 1956 1956 the supplier must provided and maintain कोन करिछि ना earthing electrode at high permit for used by the कंज्यूमर जानी पारलो नेक्स्ट पॉइंट उजिबा एटा डीएमआरसी रे पढितले क्वेश्चन दा the wire connected the neutral point to the earth electrode is called कोन कहला ना earth supply कोन कहला ना the wire connected the neutral point to the earth electrode is called electrode supply जानी पारलो सेटा कोन ना एटाला electrode supply the wire attached to the earth electrode is called earth lead the wire attached to the earth electrode को जो wire टा लागि छि ताऊ कोन कहबा सेटा कहबा earth lead बोली earth lead बोली ताको कहबा तो connecting the non-current carrying part of the supply system to the ground is known as kono na earthing connecting the non-current carrying parts of the supply system to the ground कोन कहला is known as earthing रो हमर डेफिनेशन कहला कोन ना connecting the non-current carrying part जो current non-current carrying part को of the supply system रे हमें ground करबा को कोन कहउछु ना earthing बोली कहउछु dash is used to maintain soil moisture and low resistance around the electric plate कोन ना salt charcoal and water हमें कोन यूज करूछु salt charcoal आउ water को हमें यूज करूछु salt charcoal water is used to maintain soil moisture and low resistance around the earthing जो soil moisture को जो soil ले moisture आ low resistance around create होबा पई आमे कोन यूज करूछु soil रे आमे charcoal यूज करूछु salt यूज करूछु ता सहित water मध्ये यूज करूछु गोटे मिनिट पिला माने according to IE rule a metal plate pipe water pipe or any other conductor buried in the ground is called earth electrode कोन कहला ना according to IE rule हिसाब रे ए मेटल प्लेट गोटे मेटल प्लेट टा पाइप हो किंबा वाटर पाइप हो किंबा कोन कहला एनी अदर कंडक्टर जे कोनोसी कंडक्टर हो कोन हेतिबो ना बियोर्ड इन द ग्राउंड द्वारा बियोर्ड हेतिबो ताको हमें कोन कहबा ना earth electrode बोली ताको कहबा a mixture of charcoal and salt should be filled around the earth electrode to ensure effective earthing हमको effective earthing provide करिया पई आमे salt ता सहित charcoal ता सहित water यूज करूछु कोन पई रेजिस्टेंस को लो करिया पई हमको effective earthing हमें पाइबा पई जानि परलो a mixture of charcoal salt should be filled around the earth electrode to ensure effective earthing पई इंश्योर होबा पई हमें कोन यूज करूछु ना चारकोल यूज करूछु सॉल्ट यूज करूछु ता सहित वाटर मध्ये यूज करूछु dash is the way to reduce the resistance of the earth जो हमें कोन गला ना कोन यूज करी कि हमें resistance of the earth resistance को हमें कमे परिबा increasing the area of the plate रो एरिया में जदि बढ़ाई दोछु increasing the area of the plate जदि हम बढ़ाउछु is the way to reduce कोन हबो ना resistance of the earth रो resistance कोन हबो बढ़ी जीवो reason for using good earthing metal in power insulation provide कोन करिवो ना low resistance discharge करिवो path for earth leakage current पाई जो earth leakage current पाई जो हमर path तयारी होची सेठी low resistance किए यूज करि परिबो ना reason for using हमें good earthing करले low resistance
path tiyari kari paribo non-current carrier setup and earthing of conductor is called kon equipment earthing को प्रकार earthing ना सेटा कहबो equipment earthing the secondary side of the distribution transformer is earthed because the earth provided protection to machine and human life कौन कहला because the earth provides protection to machine and human life ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ the secondary side of the distribution transformer is earth जो ट्रांसफॉर्मर अछि जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर आमर अछि ता सेकेंडरी साइड रे आमे कोन पई अर्थ प्रोवाइड करछु ना बिकॉज़ द अर्थ प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू मशीन्स एंड ह्यूमन लाइफ मशीन को मध्य अर्थ प्रोवाइड करिवो ह्यूमन लाइफ को मध्य सेव करिवो कास्ट आयरन पाइप इज रिक्वायर्ड फॉर डैश पाइप डैश जो कास्ट आयरन पाइप अछि इज रिक्वायर्ड फॉर पाइप अर्थिंग कास्ट आयरन आमे कोडी यूज करूछु ना पाइप अर्थिंग रे कास्ट आयरन इज रिक्वायर्ड हमर कोडी रिक्वायर्ड होची ना पाइप अर्थिंग रे डैश इज द मोस्ट सुइटेबल टाइप ऑफ अर्थिंग फॉर ए सबस्टेशन जो सबस्टेशन अछि मोस्ट सुइटेबल कोटा पाइप अर्थिंग ता एटा वेरी इंपोर्टेंट पिला वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन टे मोस्ट सुइटेबल नले गुड अर्थिंग पचारि दबो नले कोन पचारिबो ना मोस्ट सुइटेबल कोटा पाइप अर्थिंग ता नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा अर्थिंग मेथड्स व्हिच आर यूज्ड नाउडेज कमिति ना पाइप अर्थिंग ता कोन कहला अर्थिंग मेथड्स व्हिच आर यूज्ड नाउडेज हम वर्तमाने को प्रकार यूज अर्थिंग करूछु ना पाइप अर्थिंग हम वर्तमान करूछु as per the Indian electricity rule 1956 all the medium voltage equipment must kon heitibo be connected with at least two different and specific connection wire जो दीटा different connection हेतिबो कोन wire सहित मध्ये से connect हेतिबो as per the Indian electricity rule 1956 कोन कहला all the medium voltage requirement must be connected with at least two different and specific connection with का सहित ना earth सहित for performing measure test on low voltage equipment 440 volt जोटा 10 sufficient voltage rating केते ना 500 volt कहला for performing measure test on low voltage equipment रे the sufficient voltage rating केते ना 500 volt all earth wire and earth continuity conductors are generally made of कहा द्वारा तैयार होता है ना galvanized steel द्वारा कहा द्वारा ना galvanized steel द्वारा all earth wire प्रत्येक earth wire हो and earth continuity conductors हो are generally made of कहा द्वारा ना galvanized steel द्वारा very very important पाखापाखि 5 रु 7 टा क्वेश्चन केवल galvanized iron ऊपर आसिलानी तो एटा very very important पिला माने the insulation resistance test voltage कोन कहले acquired for equipment operating at to maximum voltage from 600 volt is dash केते ना 1000 volt पर्यंत तो पिला माने आज पई एति की थाउ तो नेक्स्ट क्लास रे आउ जति नेक्स्ट इंपोर्टेंट पार्ट अछि ताको हमें डिस्कशन करिबा तो एटा हमें कोडू डिस्कशन करूछु ना जो हमरो बुलेट अछि 50,000 एमसीक्यू प्रोवाइड करिछि तार एटा अर्थिंग चैप्टरटा तो पिला माने जहा को भी आम वीडियो भल लागुथबो निश्चय हम मानन को लाइव सब्सक्राइब करंतु ता सहित जो माने भी अन्य वीडियो जाको देखिया पई चाहउछंती से माने हमर एप्लीकेशन ईएसपी जो इलेक्ट्रिशियन स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन अछि प्ले स्टोर रे ताको मध्ये आपण माने डाउनलोड करिकि ताको देखि परिबे हमर सेठी बहुत गुडा क्लास अपलोड होई जाईछि ऑलरेडी एवं बहुत गुडा जिनिस आपण नुवा नुवा जिनिस सेठी जानि परिबे तो धन्यवाद पिला माने आपण मानको जदि मो क्लास भल लागिथिबो निश्चय गोटे मते लाइक करिवे एवं आउ कोन हमें इंप्रूव करि परिबो आपण मानकर फीडबैक मध्ये आपण मानको देबे थैंक यू एवरीवन।